देखते हैं हिमांशु कहाँ पर इसको हमको शेयर कर सकता है, देखते हैं। शेयर तो आ रहा कंप्यूटर में। वी कुड नॉट डिस्प्ले योर शेयर्ड कंटेंट, अलाउ स्क्रीन शेयरिंग इन योर ब्राउजर, देन ट्राई। ये क्या है? फिर से कर रहे कि क्लिक शेयर टू शेयर द कंटेंट इन द मीटिंग। ओके, कर लिया है एंड अगेन आई पुट द शेयर। सो यहाँ पर आ रहा है चूज टू व्हाट टू शेयर टू अरिवत्ता सहोदया। तो क्रोम टैब कर दिया या एंटायर स्क्रीन दिख नहीं रहे, एंटायर स्क्रीन। ठीक है, और कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए बोले क्रोम टैब देखते हैं। तो उसमें आ रहा है व्हाट्सएप आ रहा है। नहीं नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं रखा है, विंडो देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है मंशु, दिख नहीं रहा, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। देखते हैं कि शेयर, एक मिनट हम देखते हैं कि शेयर में क्या दे रहे हैं। ये तो फिर से शेयर वही दे रहे हैं। शेयर में मैं ऑप्टिमाइज टेक्स्ट एंड इमेजेस, क्या करना है? दो ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्टिमाइज फॉर टेक्स्ट एंड इमेजेस, ऑप्टिमाइज फॉर मोशन एंड वीडियो। मोशन वीडियो पर क्लिक करते हैं, मोशन भी टेक्स्ट भी है, वीडियो इमेजेस। ठीक है, हम शेयर में क्लिक करो बोले, शेयर में क्लिक करना बोल दे रहे। विंडो तो आ रहा है, लेकिन विंडो कहाँ पर है? हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए रुके ना। आ तो गया, लेकिन मेरा ये दिख नहीं रहा ना। स्क्रीन शेयर हो गया, कंटेंट शेयरिंग कहाँ करूं? देखो, शेयर में क्लिक कर लिया। व्हाट डू यू वांट टू शेयर? ऑप्टिमाइज योर टेक्स्ट मैसेजेस, ऑप्टिमाइज मोशन एंड वीडियो। हम अभी टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, देन दे रहे कि शेयर। शेयर के बाद क्रोम टैब, विंडो, एंटायर स्क्रीन, और कुछ नहीं है। विंडो पर, विंडो पर कर लिया। सेटअप अल्ट्रा व्यूअर इन ए मीटिंग, क्लिक करके देखते हैं। इन्हें मीटिंग दे रहे हैं, इन्हों मीटिंग क्या है? हम ऐसे करके देखूं भाई, उस बाकी लोग को भी अलाउ किया होगा ना। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में तो है नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप लाइन में रहिएगा, आराम से हम देखते हैं क्या ये आ रहा है, देखते हैं। शेयर में क्या मतलब हो रहा है? शेयर योर स्क्रीन, लेकिन कंटेंट कहाँ से लाऊं? हम्म, स्क्रीन पर खोल के देखें। अच्छा ठीक है,
कर दिया? ठीक है, आया?
Yes, sir. We are having an issue with HP True Version HD camera. Low. Because everybody has to see. Just now I was visible. Now I'm able to visible. No, it's not able to switch it because it's showing that uh, your version of the camera is unable to make it on. Anyway, don't worry. I'll go ahead with that. But view visible hoga, control shift to start the video. Control shift and start the video. Control shift B. My camera is not visible enough. Okay. Camera is not visible at all. It was visible. I'm audible. Okay, then it's no issue. So let us see that the the true version HD camera. No. Let me see then other mobile so that I can. No, I'll do one thing and I'll open with other laptop. You just to see that whether I'm able to see it or not.
Yes, yeah, now you can share it. In the meantime, can you share the video? Himanshu sir, can we start? Other. The lung. दरवाजा बंद कर दीजिए. क्या बात है, हिमांशु सर को देख नहीं रहे. हाँ हिमांशु सर, थोड़ा सा शेयर कर लीजिए. Okay. In the meantime, let me. I'll talk. Okay. 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 Thank you, Himanshu sir. Thank you for the always be there with the Aryavata. Really speaking, he's really the backbone of the Aryavarta Sahodaya. Before starting and before discussing with you all, I personally tell you once 1 minute time. First thing is all of you please stop your video, because while you are opening your video the views coming and it is distracting me. If you would have been the your face would have been seen, that would be helpful to me, but here I'm seeing that it's distracting. Please kindly stop videos. Ranveer Yadav sir, please, it's an earnest request. सर प्लीज अपने वीडियो को बंद कर दीजिए. आपका दो फैन मुझे डिस्ट्रैक्शन में कर रहे हैं. रणवीर यादव सर, रणवीर यादव सर, आप नहीं करेंगे तो मैं आपको कुछ किसी तरह से रिमूव करना पड़ेगा. Now let's see that what I wanted to tell before starting it, I must extend my heartfelt thanks to my founder, Aryavata Sahodaya. That's none other than Dr. Zibi Singh sir, and the completely the training is on the shoulder of the
It's none other than to Himanshu sir. Thank you, sir. He's always there. And today also I was facing a lot of glitches. Then he's the one who is there to help me out and solve the issues there. Now the thing is that you just imagine first time though I have taken the lot of the offline, but I never never been into this online training. जब से ऑनलाइन ट्रेनिंग में नहीं करने पर क्या हो गया है, मुझे उसकी कुछ तरीके शेयर करने में दिक्कत हो जा रहा है. यहाँ पर मैंने अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहे, मैं आपको ये बता दे रहे कि जनरली आप देख लीजिएगा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अनअवेयरनेस के, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है. बार बार उसके बारे में हम लोग को नहीं जानकारी होने पर हम उस पर प्रॉब्लम फेस करते हैं. डोंट यू फील दैट सच एन एजुकेटेड we are being doing a lot since COVID time onwards. We are using this online class, but still few days I'm not using. I'm just perplexed and facing the problem. हम इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर दे रहे. ऐसे कंडीशन में आप देख लीजिएगा कि आपको भी लगेगा कि क्या हो रहा है, कि मैंने हमें हमें क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करूं. सो मेनी थिंग्स वर फ्यू मिनट्स मुझे प्रॉब्लम हो गया. तो मैं आज के है पेरेंटिंग द पेरेंट्स. मैंने आपको बता दिया, मैंने ऐसे टीचर इतनी सालों से कर रहे, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम फेस किया. लॉट ऑफ इश्यूज आई हैव फेस. सो व्हाई डोंट द पेरेंट्स एज दे आर स्टिल they aware about the this you can say that they aware about this NEP and all those things? Are they aware about it? No. Are they aware about it completely the changes? No, they are not aware about it. Are they fit? We are just now only we are struggling. Still many of the schools are 100% is not implementing the NEP. आप सोच के देखिएगा ऐसी स्थिति में हम अब ये डिस्कस करने जा रहे हैं पेरेंट्स को हम क्यों क्या है, क्यों जब पेरेंट्स इज नॉट सपोर्टिव, parents are not supportive to the child, parents environment, the family environment is not good, automatically what are the problems faced by the teachers and the schools? Here we are talking about that only, because we face lot of issues, because we need to be that training the parents is highly required to deal with the children, as it is a virtual step to building stronger families, fostering positive and child development, reducing conflicts at home. यदि हमारी बच्चों को हमें स्ट्रॉन्गर बनाना है, उन्हें हमें बहुत अहेड लेके जाना हो, तो उसका बेस स्कूल से मिलना चाहिए. तो बेस स्कूल से कैसे? सबसे पहले हम लोग ये देख के हम पेरेंट्स को आर वी फ्यू क्वेश्चंस आर कमिंग. हम आपको आपसे मदद क्या कर रहे हैं, आप हमको थम्सअप से आप हमको मोटिवेट करने के लिए आप बता देंगे किसी भी पॉइंट पर आपको discussion we wanted to do it, and we'll do it within this 1 hour. 1 hour we will discuss all those things. Let's see that are we aware, are we aware about all the children's family condition? Are we are we are taking the classes, inside the classes 40 students are sitting and 40 of them are coming from 40 families, and the 40 families are the 40 different types of bringing up of the child, and what else the child from the childhood days are facing. Are we aware about it? No. So what is firstly the schools required it at the parenting. Parents should get the idea that the what is really what. Are they understanding the they are in that IAS, IPS, engineering, what more, doctor? Apart from it, there is no. My son should be an IIT, and my son should be an NEET, and now the one more thing comes CLAT. So apart from that, nothing. He cannot be a singer. He cannot be a dancer. He cannot be a painter. He cannot go for the social worker. He cannot be teacher. My God, such a small poor job will take it. He cannot. Now you have noticing that spiritualism. Many of them is going into that. You can see that we are old, Patna witnessed that the Sadguru's entire hall was filled.
and he was sharing his knowledge, and he was helping us to how we can live happily. This is the finally what we want. We want to the happy life. The child also required that his happiness is been taken into consideration, or the child happiness is taken to consideration. No, the first thing is that what the child, we need to make the parents aware that please understand the child. अभी अंडरस्टैंड द चाइल्ड बोले कि मेरे बच्चे को मेरे बिना, मेरे अलावा और क्या आप जानते हैं, बिग क्वेश्चन। तो वहां पर मल्टीपल इंटेलिजेंस ये थियरी सब क्या है, सब पैदा होने के साथ साथ बहुत सारा क्वालिटी के साथ आते हैं, डिफरेंट क्वालिटी के साथ आता है। सबने जन्म लिया तो अलग अलग काम के लिए हुआ, सबको एक जैसे मत डालिए। हमें हिमांशु सर साइंस की बेस्ट टीचर है, क्या हम शायद उसके लिए बनाए नहीं होगा? हम शायद, हमको लगता है कि नो, आई कैन नॉट। तो ये भी तो हो सकता है कि हम जो चाहते हैं वो बनना कोई जरूरी नहीं है। हमें पहले पहले थिंग इज द पेरेंट्स से बोले आप बच्चे को कितना अंडरस्टैंड करते हैं, आप बच्चे को कैसे ये ब्रिंगिंग अप, पेरेंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ कम्स द पेरेंटिंग इज रॉन्ग। आर द पेरेंट become a parent when they are mentally physically correct? No। आप सोच के देखिए, जब वो खुद ही तैयार नहीं हुआ था एक बच्चे का पालने का, बच्चे का कोइंसिडेंटली शादी हो गया, बच्चा हो गया, पाल पोष कर रहे, लेकिन क्या ये है? हर चीज के लिए प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है। बोर्ड एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने के लिए प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है। नाउ हमारे पास जो बच्चे आया है, वो पेरेंट्स ने तो कोई प्रिपरेशन किया ही नहीं है, प्रिपरेशन का बिना किया वाला है, प्रिपरेशन का बिना आया वाला है, तो उसको हम प्रिपेयर कर पाएंगे? वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये करना भी, जो हो गया हो गया। अभी क्या कर सकता है? अभी क्या कर सकता है? ओनली थिंग इज दैट द वी कैन टेल द एक्टिव लिसनिंग। पेरेंट्स को पहले सुन ले, और उनके साथ में एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज कर ले। सर आप शेयर कर सकते हो तो शेयर कर लीजिएगा सेकंड स्लाइड, क्योंकि हमने बोला कि अलग स्टेज में भी अलग है, बच्चे को डिफरेंस आ जाता है डिफरेंट स्टेज में। पहले है टॉडलर्स एंड टीनर्स आर वास्टली डिफरेंट इमोशनल, फिजिकल एंड कॉग्निटिव नीड्स। छोटा बेबी होता है, वो बेबी को तो अपनी अलग है, उसको चाहिए खाना पीना, सॉफ्ट कुशन लाइफ और कोसी लाइफ, और बेबी रिक्वायर्ड दैट द कल रिक्वायर्ड दैट द कल ले लेंगे, बोल दीजिए, रिक्वायर्ड दैट द उसको कैसे रखना है, कैसे करने के लिए करना पड़ेगा। आप आज अभी क्या है, उसके बाद क्या है, उसको उसके यूनिक को कंपैरिजन करने शुरू करता है। और उसके बाद जब उसके पेरेंट्स बोले ओ देखो तुम क्लास में पढ़ता, वो तो अच्छा पढ़ता है, तुम तो कुछ नहीं करता है, उसके हैंडराइटिंग अच्छा है, उसका अवार्ड मिला है, जो कंपैरिजन करने शुरू करता है, तब उसको हार्म करने शुरू करता है। और उसके बाद वी नो दैट द love, consistency, environment directly shape a child behavior। हमारे हमें हमें उसकी बिहेवियर तीन तीन हर हर स्टेज में, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग है, तो हमें उसको उसके लिए आपको तैयार रखना पड़ता है बच्चे को। बच्चे के हमको बताना पड़ेगा इनका अलग स्टेज में अलग डिमांड्स है। डिमांड क्या है? दैट शुड बी फुलफिल्ड। फुलफिल हु विल फुलफिल? पेरेंट्स हैज टू बी filled। For that they should understand the child, don't behave like the childhood parents are behaved like with a child the same way. When they are growing stage they will do it. That's not possible. Now positive communication, teach the parents that, sorry, one call is
To share the PPT, Himanshu sir, and ask that he is unable to share the PPT. Acha, symbol ma'am is sharing. Okay, ma'am, please do it. So different stages have now understanding the children के understand कर लीजिए उनका different stage of development. Different stage में different feelings है, different demands है, and different feelings developed. So we need to be changed accordingly act with the child. Now positive communication. Always talk to the be. Ask the parents to give time to the child. They need outcome, but for that they need to give something. That is that the active listening. Learn without interrupting. Give full attention. लेकिन आप उनका बात सुनिए, सुन के उसके ध्यान दे दीजिए वो क्या बोल रहे हैं, गलत हो सही हो, उनके अपने फोली हो, इनकी वट एवर इट इज, लिसन इट. Use while speaking to the child. Teach the parent that use appropriate languages. Simple, clear words are suited to the child level. ये नहीं साल का बच्चे को डील करने के जैसे क्लास 1 का बच्चे को भी डील करे और या यूकेजी एलकेजी का बच्चे को डील करे. ऑटोमेटिकली दे विल स्कर्ड ऑफ स्लोली एंड स्लोली he or she will decide that not to do anything so that my parents won't point it out. If I do something, it may be wrong. उनको लगेगा कि अरे ये तो हो सकता है कि हमसे गलत हो जाए, तो क्या होगा, हम नहीं करेंगे, हम कुछ करें नहीं. Slowly and slowly you are pulling back the child, make him understand, let him to commit the mistake. जो हमारे पास क्रॉकरीज कितना आता है, सेट आता है, वो सब वहां पर एकदम 6 का है. 6 तो अक्सर नहीं रह रहा है, हमसे टूटता है. हमें तो कोई डांटते नहीं है, हमें नहीं डांटते, लेकिन उनके एक खिलौना टूटेगा तो हम लोग उसको इतनी डांट लेते हैं कि इतना ऐसे बोल देते हैं कि फिर उसके मन में कि what kind of behavior the child will develop if he or she listen it. And when if I say I understand you feel, suppose somebody's teacher scolded, small kids go and say tell that आज मेरा टीचर ने हमको डांट लिया. Why? Understand your feeling, you feel very sad. Let's see that the why ma'am is scolded you, which point, let's discuss in that. And now you don't cry, we will discuss with the sir ma'am and I'll find out the reason and we'll rectify it. At the same time, teacher also half parent hai. He or she should understand also that scolding is not final. Or with scolding everything cannot be achieved. Scolding, then it's okay. You have to scold, and scolding is not, you make them understand it. The replace shouting with a firm, calm, respectable. That is the, you have to, ma'am, positive communication. Slide 3, positive communication. So now at a very calm, very, you can say, respectful way, we're shouting them, just क्या किया है वो नालायक, this and that, some such dash dash, very rough languages generally used. And the idiot, you are useless, you are hopeless, these words automatically the impact on the child. So better Excuse me, make ma'am. the, it's partially राधिका मैम, जी मैम स्क्रीन हाँ दिख रहा है क्या? यस स्क्रीन दिख रहा है, विजिबल, ओके बट ओके इट्स मैम. बिगर नहीं है, यू कैन मेक इट बिगर से. नाउ डिसिप्लिन, व्हाट इज डिसिप्लिन, क्या डिसिप्लिन में व्हाट आर द, फोकस ऑन गाइडिंग बिहेवियर नॉट एनफोर्सिंग. The what is you have to teach, don't control the, when you control the every moment, what will happen when something is push moving and we stop it, we controlling it, it stop it. Any vehicle, if it is moving time, anything which is moving, we stop it, then its movement stopped.
The same thing is happen with the child also. Let's take into example. Focus on guiding behavior. Next, ma'am. Focus on guiding behavior, not the enforcing that. You should not enforce that. You have to do this one. You have to understand. You could ask that, why do you want to do this one? Why so? Then he or she will have got own ideas, own interest, own feeling, on everything. It's not required that the everything whatever we feel that child should do it. So the same thing with the in the classroom also. As a half parent, we should not control them. We should make them that aware, guide them. Why it is important, why one should do this, what are the options. That sometimes it's happened that the what's happening, just for one example, the moment when we'll ask that what is the color of sky, immediately child will tell that blue, because we made it, we printed on their mind that yes, it's a blue color only. तो जब ऐसे कोई एक अच्छी ये भी, इट्स नॉट बैड है, लेकिन एक है ना इम्प्रेशन मन में, कभी स्काई का डार्क ग्रे नहीं हो सकता है, ऑरेंजिश नहीं हो सकता है ना, नून टाइम में व्हाइट नहीं देख सकता है, क्योंकि उनके टीचर ने, मम्मी ने, ट्यूटर ने यही सिखा चुका है कि ये है, तो वही होगा। आप सोचिए, जो जब इसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जब उसकी हमारी बात, जब स्काई इज और शो फ्लावर इज रेड, that's already imprinted in their mind because we are repeatedly doing, and the same kind of negative repeated behavior, if parents will do at home and the teachers do in the classroom, it will affect the child. So we have to make the parents aware that it is the duty, because we need full support. One only school cannot make that, school cannot achieve that, the NEP completely, NEP's aim cannot be achieved by only with the schools only. We need full control, full support. Now, if the toy is broken, the child won't have it. Instead of physical punishment, suppose you just imagine, let us all when the child toy broken, what will happen? Child already lost it, child already feeling sad. At the same time, parents give the tight slap of it. Same I told in the crockery, when it's the kitchen, if it is broken, who is beating, the mom or the didi? Will you do it? No, because we know that it can slip, it can break. So, but here there is nothing. So that also, the child is knowing that anything which is damaged, then the solution is that give a tight slap. They will behave the same thing in the classroom. They are learning, they are watching, they are understanding the what is happening with them. That they will implement that only, because role model, parents as well as teachers are the role model to the students. Praise effort, not just a result. If they do something, wow, well done, you are very nice, okay, you tried, that's enough. We'll try again, you may fail again, you have to, when you are baby, you know that you number of times you fell down, but after that, so you woke up, and finally now you can walk, run and jump, and you can do the hopping, everything you can do it. So please don't be disheartened that आप अपनी इतनी दुखी नहीं होना चाहिए। आपको होना चाहिए कि आप कोई बात नहीं, आपने कोशिश किया, कोशिश ही कामयाब आएंगी। कोशिश कर लिया मतलब आप हाफ काम हो चुका है। ऐसे कोशिश करते रहना, शायद है कि एक बार, दो बार, तीन बार आप हारे, लेकिन आप फोर्थ टाइम, कभी अपने सेकंड टाइम भी जीत जाएंगे। कभी ऐसे नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपने बोल दिया, एक बार हारेगा, नेक्स्ट टाइम आप जीतेंगे, तब तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो डिप्रेशन आ गया, बच्चे सैड हो जाएंगे, तो वो सैड के लिए भी मौका नहीं देते। नेक्स्ट इज दैट इमोशनल बॉन्डिंग एंड मैनेजिंग बिहेवियर। Emotional bonding, spend quality time. Ask the parents that, are you giving the proper time? In this in this world of mobile, we are fully engaged in the mobile, and we are sitting in one room, living room, all so every time we are also watching, the child also watching the mobile only. On that case, you can storytelling, playing meals,
show affection and support to the children interest, not just academic. Don't always talk to the academic. Have play with them, jump with them, do the storytelling with them. Many stories are the fairy tales. They may not be knowing now. The दादी माँ की नानी की स्टोरियां तो होती नहीं है सब. We are in the nuclear family, so please find a time with them because you brought, make them understand. It's your responsibility to make them and support to the school also, so that we can make a really the citizen, good citizen. That's what our dream is. That don't count the child with the marks. Now stay calm first. Find that, ask the parents that, find the root cause of why the child is doing so. What is the reason? And they want attention seeking, they are tiredness, hunger, stress before reacting. Many act the thing. Why? कम सम चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, कोई चीज तोड़ देते हैं, मारते हैं, ऐसे सब दिखाते हैं. नहीं तो उनको नींद कि नहीं मन होता है, नहीं उठना है, स्कूल जाने के लिए रोना है, ये सब हो जाते हैं. देन फाइंड दैट द व्हाई, find the root cause of it. Are they fearing? If then they had to share with the school. Are there any child is bullying him? From the childhood days, if they take care of all those things, the child can, the emotional well-being of the child will be high. Resilience, learn everything. They know that the how to make the face the challenges. How can be successful person? How one can be confident enough? How one can make a success in the life. Offer choices. डू यू वांट होमवर्क बिफोर और आफ्टर? ऐसा नहीं कि मेरे घर में आप बिफोर खाने से पहले होमवर्क करो तब खाना देंगे, या खेलने के लिए जाना हो तो पहले होमवर्क करो तभी. नो, यूज टाइम sparingly and with the explanation. मैं आपको टाइम दे देंगे, आपको ये काम भी, ये सब भी काम करना है ना. आप बोलो आपका आज क्या, ये कोई जरूरी है कि हर दिन है सेम टाइम में हमें मूड हो जाएगा हर चीज के लिए. हमारा 11 बजे खाना खाना है, 11 बजे डेली खा पाते हैं? कभी 11 बजे फूड आते हैं तो उनके लिए भूख नहीं लगता है, ऐसे बोलते. द सेम थिंग कैन बी हैपन विद द स्टडीज आल्सो. सो गिव द choice to them, लेकिन make them understand that that's a home routine. You have to ask the child parents that make a routine. School having the routine, first bell go this time, assembly is there, after the first bell, second bell, and there is a recess time. There is a system is there, and games period means game, they will go to the ground. Everything is systematic. And exam, every schedule is giving in the well in advance, and what is blueprint, everything. So in that case, please ask them that the make a routine of household, involve children to small chores of the end, build responsibility. मेरा बच्चे को मैंने बोलता है कि कुछ भी काम मत करना है, पढ़ाई करते रहो. No, ask them involved, ask them to learn the life skills. Because why, if you they'll not learn from the childhood days, let them to plant trees, because we know that where the world is going, where environment is to be taken much care of it. Still see it's a rainy season, we are struggling, we are sweating, we are using AC now also. Then you can imagine that how the global warming is taking place. Now that involve, ask them to involve, and ask them what do you think you can do about this. आपका कर सकता है कैसे, आप बोलो कैसे कर पाएंगे. कोई भी इश्यूज हो गया, कोई छोटा छोटा प्रॉब्लम हो गया, छोटा काम हो गया, इवन टूटा, आप कैसे इसको जोड़ सकता है, कैसे वो, हाउ कैन यू डू इट. So ask them, then automatically how the problem solving. It's not imposing the how to. So they make them understand problems are there, then solution. Mathematics में होते हैं ना, problems देते हो, then automatically the solution is there. Find that, you let that creativity, the thing to from the create, then the right brain to work. Every time it's a logic is that this is a theory, वही हो जाए, लेफ्ट ब्रेन नहीं, उनके राइट ब्रेन भी यूज कर, सोच के देखो उसके अलावा क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है. सो स्लोली एंड स्लोली उसकी कॉन्फिडेंस, वो आई गॉट अप्रिसिएशन, माई वट एवर आई सेड दैट इज वेरी गुड, दे आर हैप्पी. Hopefully the participants you are able to understand. If you are understanding, make a thumb up, if not thumb down also. I welcome it. Now the moving star, appreciate efforts.
and the program, not just perfection. अरे कैसे लिखा, इतना गंदा लिखा, इतना dirty लिखा, your answer is this, you're shabby, this and no. You wrote it nicely, you write the things you are, but slightly you can be bit better next time. Okay, better, you do little better. Slowly and slowly, when that's confidence building will take place. So please make them that the stress. We teach the parents that the how they can make the confidence building. Moving next is that the practical training to the how the we can give the some training. Ask them to have the how the child everything हम बोलेंगे तो बच्चे सीखते हैं. No, in the classroom we are asking activity method. Can't it be in the home also? Can't it be home? Today's my father and son will be one group, mother and daughter is another group, or the mama and papa, son is in one. If it is one and papa is alone or mama is alone, and both will make some role play. We'll play it, and the play always teach moral values. So that's the most important thing. And the group this when they're growing up, let's have the table. Dining table is not simply the eating. Before that, there will be group talk. They should feel that, understand that where, which level, which doing. Ask them to have it. And then some videos, good videos to be displayed. Good movies also to be shown to the child. Patriotic movies are, yes, patriotism is required. Nation first, then only think about individualism. So ask them to show it. And then that reflection also, how you can, if you were there in the place, how you will be performed. क्या है आपकी राय क्या है? Let them to reflect that, let them to understand that the oh this also can be role plays the many. स्कूल में ही सिर्फ बोलते हैं कि एक्टिविटी करवाइए, डांस करवा करके हम लोग भी आ रहे कि राम आज है रथ यात्रा है, तो उसकी पूरी स्टोरी हमने दिखा दिया. म्यूजिकल ड्रामा, child easily understood. The child who is involving it understood more than the listener also understand it. In the same way, can't it be at home also? Some of the हाँ, दादी को कैसे हेल्प करना, दादा को एल्डर्स को कैसे रेस्पेक्ट देना, पापा ऑफिस से तक के आएगा तो व्हाट शुड बी डन. दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स कैन बी एक्टेड और द मूवीज इफ it and can display the movies also. And this training session, what said I told the role play to be done. They can have two families together also can be, but there is a group activity should be done. So and the video short films also can be shown to the child. उनको बता दीजिएगा आखिर हमारी सबसे बड़ा संपत्ति कौन सा है, कौन है, बच्चे हैं. वो से अच्छा होगा तभी हैप्पीनेस होता है. ये ऐसे है, सब कमाई उसके लिए है, तो उसको अच्छा करने के लिए थोड़ा सा मेहनत कर ले हम लोग. That's the thing we are to. What support the school has to give? School have to give, because we are learning NAP, we are taking note of training. You know what are the things to be done. We are repeatedly, because repeated training is going on. So I'm sure that the everybody is getting. So if we forget something, again we are watching many videos and we are learning it. And there are now the social medias, positive side of social media is also there. So that all help us the child to know better about it. Moving next is the different developmental stage. What are the stages? One is the developmental stage. Next, ma'am, the saying no builds identity, because only वो खुद ही अपने डेवलप कर दे रहे. नीड टू कंट्रोल, क्या करना है उसको, फिर द नीड फॉर कंट्रोल एंड सिक्योरिटी. दे हैव टू keep how what are the you know that the nursery kg or good touch bad touch we are teaching how to be in the bus key. You cannot put the hands out, cannot be stretch your head out, many things. You when the elders will come, you should stand and give the, if pregnant woman will come, you need to stand. So all the things. What about at home? होम, यदि हम ऐसे मदर हम बोल रहे तुम क्यों खड़ा हो जाओ, पैसा दिया है तुम बैठ जाओ, लेट ये सिखाएगा तो क्या होगा. तो ये सब है टेम्परमेंट. टेम्परमेंट को भी देखना है हमें. और मॉडलिंग फ्रॉम पेरेंट, चाइल्ड मिरर.
कौन है मॉडल? रोल मॉडल कौन है बच्चे की? पेरेंट्स है। वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो रिफ्लेक्शन पक्का हो जाता है. सपोज you can also do a survey case study. Some of the parents are very angry, very, you can say, rude in talking. You can find that qualities in the, but quality not that features, you can see it in the child also. Even I used to tell my parent, that is someone ex parent, आप इतने गुस्सेले हैं, आप क्यों अपने बेटे के गुस्से के बारे में बोल रहे हैं? आप ही तो रीजन है, आप ही तो दिन भर ये सिखाते हैं. उसका मम्मी बोलते हैं हमको, हाँ आप ही तो ये इनको ठीक कर सकते. सच्चाई है, हम जो रिफ्लेक्ट करवाते हैं, हम जो बचपन में बच्चे को दिखाते हैं, वही बन जाते हैं बच्चे. इसलिए उनको 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 हमारे उनकी उनके सामने हम लोग सबको, सराउंडिंग सबको अच्छा बिहेवियर करना चाहिए. अच्छा ये करने, क्योंकि वो सीखता है, इम्बाइब करता है. We read so moral stories. Why we are asking again the moral stories more? Because after reading and acting, the child is who is very actively taking part in the drama, music, all this thing. You can see, see the survey of later. Such a bad child also may be very naughty, may not be good in studies, but later you have noticed that he or she is improved a lot. He understood, but from the mistake it's learned, and at the same time involved in such an act, he learned that the, or she learned that the, how one can be the, how can do well in this. Now, fear of, why the child is rigid, नहीं करेंगे, नहीं बोलूंगा, क्योंकि गलत करेगा तो फियर है. अरे मैं गलत हो सकता है, आई कैनॉट स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज नहीं हो सकता, क्योंकि फियर है. दैट इज फ्रॉम हियर. Neuroscience, most of the problems are the child or anybody facing, that is them from here only. Our brain that give that message, that give this negatively, and this also fear in the mind. Emotional needs, stubborn gains attention. You know that जो बच्चे rigid हैं रोते रहेंगे, उसको मम्मी ने ज्यादा प्यार करते हैं. तो यहाँ पर है इमोशनल नीड्स. बच्चे को मिला नहीं है तो उसको अटेंशन सीकर बन रहे हैं. उसको पता है हम रोएगा तभी हमको मिलेगा. तो ये एक चीज को देखिए, वो ऐसे बन के आया वाला बच्चा स्कूल पहुंच रहे हैं. Then you can understand that what are the problems the schools generally face it, how handling the problem, because where that's not the one child. Parents are the both of them have got one or two child only, but in the school when it comes, that's big, and that are entirely different. Where maybe few might be having the very good parents, parenting is there is very good, maybe that is the. Now some of the ओवर प्रोटेक्ट, आपने डांट लिया मतलब गया. आपने मैंने एवरीथिंग हम ही बोलेंगे, हम जो बोलते हैं सही है, और कोई बोलेगा. पेरेंट्स को भी होता है, आपने फेस करते होंगे ऐसे पेरेंट्स को. slowly rigidity and uncertainty, the stress or anxiety हो जाते हैं. हम उनको पता नहीं चले, slowly this behavior changes comes in the minds of the child. The parents should note it and seek help from the school. That make them be there is a gap still. There is a gap between the parent as well as the school teachers, between theirs. Let's reduce it. Let's have an open talk, create such an atmosphere so that our work will be very easy. हम जो भी मेहनत को इजी होना हो, तो उसके लिए हमें पेरेंट्स की सपोर्ट की जरूरत है. कॉमन रीजन फॉर पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, सबको ये पॉइंट पर है. क्या है, वाई द चाइल्ड इज नॉट. हम अपने बहुत मेहनत करते हैं, हमने पूरा पढ़ा लिया है, पूरा एक्टिविटी भी किया, स्टोरी भी किया है, प्रोजेक्ट भी करवाया, ग्रुप डिस्कशन भी करवा दिया, रोल प्ले भी करवा दिया, एवरीथिंग डिड इट, बट द रिजल्ट इज नॉट गेटिंग दैट, बिकॉज maybe some of the students are undiagnosed dyslexia, ADHD or mismatched teaching style. ये भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि हमको 40 बच्चों को 40 नहीं हो सकता है, but we need to understand that that is why CPSE system is telling group. You make them to sit accordingly. You can have the 4
एक चैप्टर पढ़ाने में और एक टॉपिक का पढ़ाते हैं, एक जैसे नहीं कर सकते हैं, आपको डिफरेंट मेथड उसमें से तीन चार जगह में तो कोई ना कोई पिकअप कर देंगे। तो इसीलिए आपको कुछ बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा, उसको डांटेगा, उल्टा जी लिखता है, उल्टा जी लिखता है, ये वैसे है वैसे, बिकॉज उसके अनडायग्नोसिस, उसके डायग्नोसिस करने के लिए करना पड़ेगा होम एनवायरमेंट। मैंने अभी तक वही बोला, पेरेंटल प्रेशर, लैक ऑफ होमवर्क सपोर्ट, कॉन्फ्लिक्ट एट होम, मम्मी पापा का लड़ाई दिन भर, दिन भर। फॉर एग्जाम्पल एक केस स्टडी बताते हैं, केजी के बच्चे ने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया, उसके लिए वो अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं था, यू नो। When I called and asked discuss with the child, what the child said, ये ना मेरे मम्मी ने दादी के लिए यूज किया है। हमने क्यों, मम्मी को गुस्सा आ गया, नानी के घर जाने नहीं दिया, तो मम्मी ने गुस्सा से बोल दिया। फिर क्या है ये, गुस्सा से बोलने, गुस्सा आ गया तो बोलने का शब्द है। बच्चा केजी एलकेजी के बच्चे इतनी जाना है, वो उनके लिए गाली नहीं है, उनके लिए गुस्सा होने पर बोलने के शब्द है। Parents were never aware surrounding a most intelligent, my kids are there, so we had to take care of it. So ask the parents while speaking something, be careful, your the future India, citizens are surrounding around you, and they are social media so active now, and they will know that how to act it, so please take care of it. Now school, emotional factors, low self-esteem, anxiety, bullying, lack of motivation. Ask the parents as well as the schools can also support that, how we can improve that the confidence level of the child, and how we can improve the, we can check them from the bullying, and maybe some of them or lack of motivation, some of them require, some are self motivated, you know that some of them is अपने खुद को, इसका कोई मतलब नहीं दुनिया को, पढ़े क्लास में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे ये काम करना है, मुझे आगे ये जाना है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेते, वो बहुत एक, you can handful, like fist of maybe, rest of them is what kind of, they need a motivation. So we had to now school environment, don't take it, I'm sorry to say, mount speak it, negative teacher relationship, मुझे उनको देखना पसंद नहीं है, बच्चा बोलता है कभी, क्यों, कोई टीचर डांटे उसकी तो वो आते हैं तो मेरे पास चिल्लाते हैं, ना तो मैं एक थप्पड़ दे देते हैं, या नहीं तो मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ बोलेगा, इसीलिए मुझे उसका, हम अनजाने में हमारी एंकर मैनेजमेंट नहीं होने पर हम इस शब्दों के इस्तेमाल करते हैं, वहां पर देयर इज अ गैप क्रिएट बिटवीन द चाइल्ड एज वेल एज द टीचर, इफ सो एंड इट विल बी नेक्स्ट ओवर क्राउडेड क्लासरूम, you are unable to, it's not the teacher's fault, it's overcrowded, okay, you cannot pay the attention to the child also. And curriculum, that's already CBSE is so nice that they're reducing and diluting, cutting and cutting, there's nothing there, whichever when we was child was studied in the standard 8 9, that's now 11, so diluted, because many things child has to learn, earlier we have to only the curricular academic only to be taken care of, it also some activities, dance, music, because it was a Gandhian philosophy was that one handicraft, one should have that, the one craft work or something to be taken care of it, that only. But now the, you can say overcrowded curriculum we cannot tell, but number of activities incorporated, so we have to plan it properly. And that time if teachers will take a lot of leave and all and a sudden comes, I need to complete this portion and push up it, then students will lose the interest of it. If you want a better result, better outcome, then we have to think about this also. Being a teacher, being me, suppose me as a teacher should think that if I'll take leave often, it will adversely affect the school environment and the students life, and they will face a lot of issues, and they lose, then they will blame, that's blame which create a gap. Physical and lifestyle, poor sleep, exercise, excessive screen time, nutrition issues, and undiagnosed health problem, बोलने का तो जरूरत नहीं है, स्क्रीन टाइम तो है ही नहीं है, तो हमें पेरेंट्स को इसकी क्लास लेना पड़ेगा, इसकी कंपल्सरी है। हम लोग पीटीए में आकर के बच्चा ये किए वो किया बोला, नो, लेट एवरीबडी टू कम इन द क्लास। हम एक साल में 4-5 पीटीएम होगा,
5 हम कर देंगे, 5 एरिया को हम डिस्कस करेंगे, हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, न्यूट्रिशन इश्यूज, प्रॉपर फूड नहीं लाए, ये है बच्चों को हम लोअर क्लास से ये खाएगा ये खाएगा ये सब डोंट खाएगा, वो आगे बढ़ेगा। तो उसकी इंटरेस्ट पर सपोज हमें क्रिकेटर बनना है तो हम क्रिकेट के बारे में बोल देंगे, वो ऐसे खाता है। या हम एक्टर बनना है, हम एक्टर के बारे में देखो अब लोग न्यूट्रिशियस वैल्यूज कैसे करते हैं, और स्क्रीन टाइम हो तो आइस हो जाएगा, आइस अंदर हो जाएगा, सो मेनी रोल मॉडल को लेके उनका कौन एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप जान लेगा, अकॉर्डिंगली आप स्पीक। mismatch between cultural context and school or limited learning resources. Next thing is social culture, which is societal problem. Some of the वो area ना वो जात का है, वाई जात का है, उसको लोग का कैसे क्या है, एक टाबू है अभी, वो उनकी तो वही है नेचर, वो लोग तो वो जात का ना नेचर, ये नहीं होना चाहिए। हमें ये सबसे दूर रखना चाहिए, दूर रखना मस्ट है। हम नाउ अभी मैंने आपको इतने बोलने के बाद ना भी आ रहे कि क्या हमारी पेरेंट्स अवेयर है हमारी एनईपी के, आर about multiple intelligence, are they aware about the this cultural shift from the what is quaf kya hai, what is shuffle kya hai, what is how areas of assessment kya hai, are they aware about it? Are they aware? You have to give that time to them, you have to teach them that the please pay attention, this changes comes up, and they have to make them that the career counseling, we need to make them aware that the parents also these are the areas. And now some of the mothers may be depressed, they may be qualified but they didn't allow to go for the job and all, so let's give an opportunity to them, teach them that these are the financial literacy or financial stability, financial earning, you have to earn, you have to know that क्लाउड किचन हो, उसको मोटिवेट करते रहे, तब क्या होगा उनके अंदर में कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस नहीं होगा, डिपेंडेंस नहीं होगा तो he or she can take decisions, the decisions will be when they are able to take the decision, automatically environment will be changed for it. Yes, they can do, they want the financial stability, stability is required to the every parent, every mother rather I can say, father than so options are, व्हाट आर द ऑप्शन, आप एक एरिया में है, पापड़ जानते तो उसी पर इन्वॉल्व हो जाइए, उसके बाद अचार के टाइम है आप वो कर लीजिएगा, ये आपको स्टिचिंग जानते हैं, कम ऑन इट्स द एवरेज और डिग्निटी ऑफ लेबर सी कि आप खुद करके कुछ कर रहे हैं, पेंटिंग जानते तो चलिए, बच्चे को भी है आप हमें कर सकते धीरे धीरे, क्या है उसको कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए उनको भी हम लोग को सिखा सकते हैं, क्या सिखाएंगे, आप ऐसे कर दो, टी शर्ट्स कर दो, टी शर्ट्स करके आप अपने घर में उसमें पेंट करो, एंड गो ऑन, यू हैव टू go and sell it, you have purchased with the 100 rupees, and how you will go with that the two teams and go to them, they take the video of how you'll convince somebody xyz, I'm not telling the parents only, anybody, and how you'll be able to sell it off, and just to take a video, and you will understand that 10 times they will meet a different person, they will understand, they will learn. एंड वी ऑलवेज काउंट दैट, नो मुझे पेरेंट्स को बोलिए पैसा से बच्चों के एक्सपोजर के लिए भी यूज कर लीजिए, द स्मॉल अमाउंट शुड बी कीप इट सेफ, their future academic progress, at the same time exposure also required, they just show the places, then they when they see they will understand, at the same time they allow them to interact with many, this all together will help them to grow it. Though in short I can tell that it's a completely rote learning से भी अब हमने स्किल डेवलपमेंट में कर दिया, हमारी भी एंटायर सिस्टम चेंज, पहले तो पढ़ लो याद करो, उसके बाद अभी हम ये नहीं बोले पोएम को याद करो, नो, understand it and write the summary of it, who said this, what are the words used for the rhyming words or the metaphor and all those things, this way, पहले ऐसे नहीं था, पहले रट लिया बीच के लाइन चले गया, बस गया काम से,
जिसके पास रटने का रॉटिंग कैपेसिटी नहीं है वो नहीं सक्सेस कर सकते। अभी वैसे सिस्टम चेंज हो गया। हु कैन, वी आर टेलिंग दैट उसने किड्स ने ये लिखा तो आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके सिचुएशन क्रिएट करके यू राइट, देन यू सी द चेंजेस। सिंबल मैम, सिंबल मैम, यस मैम। एक वीडियो है पोटैटो लिखा होगा, कैन यू शेयर इट? मैं देखती हूँ मैम, ट्राई कर रही हूँ। नहीं तो हिमांशु सर के पास में है, शैल आई शेयर टू यू? Because I am unable to share that. So हम आपके बच्चे बोलेंगे हम उसके जैसे नहीं है, उसके जैसे नहीं होना चाहिए हमें। आई एम सेंडिंग मैम, उसके जैसे एक्स वाई से हम कैसे सिंबल मैम का जैसे होगा? कभी नहीं होगा। मैम मेरे जैसे होना है सोचा, नहीं होगा। हम लोग दोनों की सब कुछ अलग है, हमारी ब्रिंगिंग अप अलग है, नेचर अलग है, सब कुछ अलग है, उनकी क्वालिटीज अलग है। वेल मैंने बोले ना, आप मैम शेयर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैम उसमें एक्सपर्ट है तो उसमें करना चाहिए। हम कैसे कंपेयर हम एक दूसरे को करेंगे? जब हम एक दूसरे को कर नहीं सकता है तो आप समझ लीजिएगा तो कैसे कर सकते हैं कि हम बच्चे के एक दूसरे को ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैं आपको बता देते कि हम जिस डायरेक्शन में, मैम पहले एक ब्लैक डॉट लिखा होगा, काइंडली शो दैट ब्लैक डॉट। हम जो बोलता गया बियॉन्ड की, बियॉन्ड हम लोग सोचने नहीं देते हैं बच्चों को। इतने सोचना है यही सोचो, इसके आगे नहीं सोचो। हमारी राइट ब्रेन को हम यूज करने नहीं देते हैं, हम ऑलवेज यूजिंग द लेफ्ट ब्रेन। 90% of the parents were using the left brain, children using the left only. They had to use their right brain also. So this is a black dot, one story you will read. It's a very one or 2 minutes only, because I'll sum up exactly the time. Ma'am, able to share? सिंबल मैम आपको दिखा रहे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड हम किसके आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप वो देखने के बाद खुद सोचने के लिए मजबूर करेगा। यस मैम, लीजिए मैम। यस स्टार्ट, आगे गया मैम। आप इसमें खोल दीजिएगा मैम, मीडिया में इसको ओपन कर दीजिएगा, मीडिया प्लेयर में। पा रहे मैम? Beautiful story. A beautiful story. The Black Dot. One day, a professor entered his classroom and asked his students All of you, to please prepare listen. for a surprise test. They all waited anxiously at their desks for the exam to begin. The professor handed out the exams with the text facing down as usual. Once he handed them all out, he asked the students to turn over the papers. To everyone's surprise, there were no questions, just a black dot in the center of the paper. The professor, seeing the expression on everyone's face, told them the following: I want you to write about what you see there. The students, confused, got started on the inexplicable task. At the end of the class, the professor took all the exams and started reading each one of them out loud in front of all the students. All of them, with no exception, defined the black dot
trying to explain its position in the center of the sheet. After all had been read, the classroom was silent. The professor started to explain. I'm not going to grade you on this. I just wanted to give you something to think about. No one wrote about the white part of the paper. Everyone focused on the black dot, and the same thing happens in our lives. However, we insist on focusing only on the black dot, the wealth issues that bother us, the lack of money, the complicated relationship with a family member, the disappointment with a friend. The dark spots are very small when compared to everything we have in our lives, but they are the ones that pollute our minds. Take your eyes away from the black dots in your lives. Enjoy each one of your blessings, each moment that life gives you. Be happy and live a life filled with love. Thanks for watching. Ma'am, take it to next one. But in the meantime, I'll switch it. You just imagine that this way the parents tell, I got a lot of issues, lot of problems are there. Its problems are very small. We are never looking to the what are the plus we have. So that's the thing we need to make the child also understand, as well as the parents too. The problems everybody having, who is not away, none of them untouched with this problem, everybody having it. Even we tell that we have a lot of issues, but we are not thinking about the plus ones, other side also. So we all, it's a quite natural, it's a human nature, but we need to make them understand. जो चीज दिखते हैं उसको जो नहीं दिखता है, क्योंकि ब्लैक स्पॉट व्हाइट के अंदर में ब्लैक स्पॉट है, तो वो दिख रहे हैं आपको, लेकिन उसके अलावा जो दिख नहीं रही, जो प्लेन बोस है, उसमें आप लिखो ना, यहाँ तो ना काला कर दिया, बाकी तो एरिया वी कैन क्रिएट. So whatever the qualities you have, with that you develop, you do the best, and then make success in the life. Ma'am, next story too, because generally child take lot of excuses. That is potato stories. That also 1 minute, 2 minute only. After that I'll end up. You have already, she's posted the attendance sheet also. So I'm hope that if anybody have got any question, please post it. Ma'am will read it. I'll explain it nicely. Yes, this is a story about the three what we feel it, what we want parents, what we wanted to tell the child also. Just watch it. A short story: Potato, Egg, and Coffee Beans. Before we start, please subscribe to our channel and press the bell icon to get the regular updates. A little boy named John lives in a beautiful home. So anyway, listen carefully. With his parents. If you are facing the problem, I'll explain it. Ma'am, may I know? A short story: Potato, Egg, and Coffee Beans. Before we start, please subscribe to our channel and press the bell icon to get the regular updates. A little boy named John lives in a beautiful home with his parents. One day, his father finds him crying and asks if something is wrong. John says meekly, "I have so many problems in life.
and talks about his problems. John's father patiently listens to him. Then he brings a bowl and places a potato, an egg, and some coffee beans in it. He asks John to touch and feel the ingredients in the bowl and tell what he feels about them. John describes how he feels about each of them on touching. The father smiles and asks John to place them all in 3 different bowls and pour water in them. He then boils them all. After a few minutes, the father turns off the stove and places all the bowls on the counter to cool them down. When they have cooled down, John's father asks him to touch them once again and feel the egg, potato, and coffee beans. John has different answer this time, and he says the potato skin is easier to peel as it has turned very soft. The egg has hardened and there is a fresh coffee aroma coming from the beans. Listening to John, his father smiles and tells him how the potato, egg, and coffee beans reacted to adverse situations. The potato has become soft, the egg turned very strong, and coffee beans have changed their form completely during their testing time in the boiling water. Moral: problems are a part of life. How we react to them makes us a better individual. Thanks for watching. I hope you understood that this, because what the problems parents tell and the child tell, you can be a middle person, mediator, and then explain such stories. Simply that it was a coffee beans, nothing useless. It's a very hard also, but when it's boiled, its aroma is very good and it's very eatable. And the egg, when he found that it was shaking, so it's not. But later, when it's boiled, though it is harder, but it's become good for eating. In the same time, here other end also, when it's boiled, then it's good. Boiled, then it's good. Boiling is a heat. Heat is showing you the problems. When you undergoing the lot of problems, that will make us strong. That's the then we will understand, we can face the any adversities. With this, thank you for thank you to all the participants, to the listener. And what are the glitches? As I told you that I always gone for the offline only and never gone to the online, but now I decided that I'll go for the online too, so that I'll rectify my mistakes of the glitches whatever I'm facing. Thank you to all the members. Thank you to Simple Ma'am and Himanshu sir. Himanshu sir, first credit goes to Himanshu. He forced me yesterday, that the day before yesterday, you have to take the. So I took it, and how I took it, that I don't know. That's you can only tell me that. So I I just want your support. It's support. If it is anything negative, I'll take it spottingly only. I'll take it because next time I'll improve it. And with this, thank you very much. Some Symbol ma'am, from the core of heart, I extend my heartfelt thanks to you to that every time you are there. In adverse situation also, you are helping us. Now, Himanshu sir, thank you very much. Over to Himanshu sir or Symbol ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. It was an excellent session once again. And will we get back with this such section with you once again in coming time? You please prepare the next training PPTs. And thank you to all the participants. We have already shared the attendance link. So please record your attendance by 6:15. And thank you, Radhika ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Do one thing, the participants, you can copy down immediately
you will close it. You cannot copy down it within 15 minutes. After that, the link will be closed. Thank you once again. Bye. Bye. Thank you, ma'am.